Assalamu alaikum. In fact, this video is also going to touch upon some basic phenomena about writing. What are those factors, what are those important elements that we have just neglected and ignored, and we do not think upon them and we just start writing? There are some factors, important elements, some basic features to keep in our mind. Once you keep all those features in your mind, it would be easy for you to develop your writing, and not only to develop, but to develop effective piece of writing. So my today's video definitely is going to touch upon some of those factors and elements that can help you while making people to understand how to write and to develop your own writing as well. But once you keep all those elements, then it is possible for you. So I'm pretty sure that this video is going to help you a lot to create kind of chunk in your mind while writing at any time, at any place. So definitely I'm going to talk about understanding the writing, the rhetorical situation, I mean to relate it with the writing, any phenomena, anywhere, any place concerned with. So let's see what are those factors which help us to write. Learning objectives. What will happen once you are going to watch this video? Identify the 4 common academic purposes, apply purpose, audience, tone, and the content to a specific assignment. Rhetorical situation. A writer, being a writer, what are those factors that affect you? What do you mean by the purpose? What does audience stand for? Topic, content, tone, like that. So we're going to touch upon now. See, when you're going to write anything, content, कुछ भी आप लिख रहे हैं तो आपके ज़हन में जो चीजें आती हैं, एक तो ऑडियंस के आपके ज़हन में कौन से लोग हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या हैं, टोन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, पर्पस क्या है, आर यू गोइंग टू इवेल्युएट, synthesize, describe, elaborate, explain, whatever you're going to do. So these, your content basically is the center which changes its magnitude according to these factors. So let's see what these factors are. Basically, there are 3 elements which shape the paragraph, any kind of paragraph. Purpose, the reason the writer composes the paragraph. Tone, the attitude the writer conveys about the paragraph subject. Audience, the individual or group whom the writer intends to address. The purpose, what is the text been written? Why is the text been written? आपने जो लिखा है वो क्यों लिखा है? आप किसी को entertain कर रहे हैं, किसी को inform कर रहे हैं, या describe कर रहे हैं, explain कर रहे हैं, evaluate कर रहे हैं, means you are coming with the pros and cons of something. Are you going to pursue somebody? Are you going to give the arguments over there? Whatever the things are there in your writing, when the question is posed before you, role of internet, evaluate. तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? चेंज हो जाएगी बात. Role, explain the role of internet. अब explain के दौरान जो writing का style है, chunks हैं, जो effects करते हैं, वो change हो जाती हैं. Topic same है, लेकिन because of one word, evaluate and explain, things will be changed. Internet is a tool or resource to entertain. अब अगर इस तरह से लिखना है तो वो
बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाउ इंटरनेट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सी, तो अगर इस तरह से है तो दीज आर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अगर मैं वो कह रहा हूँ यूज ऑफ इंटरनेट आर गुड और बैड, सपोज एडवांटेज अर्ग्यू argue the uses of internet, अब वहां पर आप फेड फिगर्स के साथ आएंगे। Why internet is necessary, a persuasive writing, so because of these words your writing is going to be changed wholly solely। ये नहीं कि आपने कुछ लिख लिया और आपने कहा मैं लिख कर आया हूं, नहीं, आपसे क्या मांगा गया कि आपको डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, एलाबोरेट करें, या एवेल्यूएट करें, या परस्यू करें, या आर्ग्यू करें। because of these words your content is going to be changed। One. Second, audience, who's the text aimed at, आप किसके लिए लिख रहे हैं, who's your reader, who the person who listens to you, means in speaking as well। Now see, अगर चिल्ड्रेन है तो लाजमी बात है आप उस तरह से चंक एक्सप्रेस करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, लिटिल बिट लोअर लेवल होगी। अगर एडल्ट्स हैं तो कुछ आप आगे जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कायदे वाज बॉर्न इन 1980, नो नो नो, रोल ऑफ कायदे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे अपनी आइडियाज को। मैन, वुमेन, टीचर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, so many people are there, so many things are there, so many professions are there, trainers, ठीक है ना। उसके लिहाज मीन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के लिहाज से आपको अपना कंटेंट चेंज करना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स है तो कंटेंट अलग है, अगर टीचर्स हैं तो कंटेंट अलग है, स्टूडेंट्स हैं तो कंटेंट अलग है। सो इवन कि हमने एक जगह पर पढ़ा कि पर्पस के लिहाज से ये है, लेकिन ऑडियंस को भी हमने ध्यान रखना होता है। ऑन वन हैंड पर्पस, ऑन सेकंड हैंड ऑडियंस। टोन, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल रख रहे हैं या इनफॉर्मल रख रहे हैं। फॉर्मल मोस्टली वी राइट इन business letters, applications and so on, so but informal also there that we follow them in the writings। आपका टेक्स्ट कौन सा है, व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग टेक्स्ट इज इट, वो पोस्टर है, डायरी है, एवोल्यूशन है, आर्टिकल है, रिसर्च है, स्पीच है, एसे है, एडवर्टाइजमेंट है, लेटर है, व्हाट एवर दैट इज। सो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि एसे की कंपोजिशन अलग है। अगर मैं कहूँगा यूज ऑफ इंटरनेट तो एसे में अलग होगा, स्पीच में अलग है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट में वो लिख रहा हूं तो उसका कंटेंट अलग हो जाएगा, जो कंटेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है ना। सो पर्पस, आइडियंस, ठीक है, टोन, टेक्स्ट, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके राइटिंग को चेंज कर लेते हैं, आपके राइटिंग का कंटेंट चेंज करती हैं। इट इज अगेन यू टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप। इट इज ना आपने स्पीच लिखी है वो वही फॉर्म हुआ, डायरी लिखी भी वही फॉर्म है, आर्टिकल का वही फॉर्म है, इट इज नेवर एट ऑल। राइटर, अब राइटर के लिहाज से कौन सी चीजें होती हैं, योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट अफेक्ट व्हाट यू राइट अबाउट एंड हाउ डू यू राइट अबाउट इट। अपने अपने फीचर्स, अपने ओन इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, इम्पैक्ट, इफेक्ट। Writer factors which can affect your writing include, now see, your age, experience, gender, location, your political beliefs, your education, parenting, peers, friends, religion. These are the major factors which are having the effect on your writing. They cannot, you cannot put them off from you. They are having somehow role in your writing. Yeah. Now see, genre, are you going to write a fiction, a news article, review, editorial, analysis, or autobiographical story? Any genre, there are so many scores of genres are also available. What genre you are going to write? To see, just one content is there. On the one hand, measure. One is audience, purpose, and tone. These are the three major ones. Then writer himself. Then genre. So these are the situations which are concerned with your writing. Rhetorical situation of understanding towards writing that can help you. Topic, whatever it is that you have selected to write about may be broadened or narrowed depending upon the length of the article and your level of interest. Context.
Situation which generates the need for writing, affected by the time period, location, current events, cultural significance. Why I'm going to write something? Definitely I'm under some operations, under some issues, under some guidelines, doing any kind of program, doing research, doing writing article or any other purpose in writing poem. तो कंटेंट जो भी होता है वो उसके लिए टाइम लोकेशन सब चीज़ों का है कि माहौल बना हुआ होता है. So location also plays a good role. You need a good place where you may find the peaceful environment, serene, tranquility should be there everywhere. Then when you're going to write something. So it is, as I gave you in the beginning, writer, purpose, audience, tone, topic, context, genre, and there can be so many, but these are the important ones which are directly associated with your development of writing. Try to understand all these things, especially purpose. कि purpose के लिहाज से आपकी writing एकदम change हो जाती है. So I'm pretty sure once you think same chunk with the different words like explain, evaluate, analyze, ठीक है, explain, तो उसके लिहाज से आपकी writing change हो जाती है. So I'm pretty sure that you will follow all these things when you are going to write anything. So you cannot say that it is not anywhere, it is everywhere. Where are you going to write? It exists every time you write. जब आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके अपने beliefs हैं. When you write, आपके सामने का audience है तभी तक आप लिखते हैं. So this situation you cannot deny this situation. Mostly we commit a mistake while writing without keeping in mind audience, topic, and purpose. Thank you. And I'm pretty sure this video is going to be very much helpful to you. Keep in your mind this purpose, audience, topic. Again, I'm insisting you, and pretty sure once you follow, your writing somehow will be changed. Keep on practicing, watching and writing your own contents. Thank you, and have a nice time.